Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says potential energy of a body is the energy possessed by a body by virtue of its motion. P potential energy is equals to mgh, where the symbols have the usual meanings. Kinetic energy of the body is the energy possessed by body by virtue of its velocity. Kinetic energy formula is given as half mv square. Energy can neither be created nor be destroyed. However, energy can be changed from one form to the other, such that energy appearing in one form is equals to energy disappearing in other form. The change in kinetic energy of the body is equals to the work done by net force acting on it. A body of mass 2 kg initially at rest moves under the action of an applied horizontal force of 7 Newton on a table with coefficient of kinetic friction zero point 0.1. Take g as 10 meter per second square. Compute the option. First part में हमें find करना work done by applied force in 10 second. Second part में work done by friction in 10 second. So to understand this question, we need to understand about the key concept of work done. And अगर हम बात करें work done की, so in a general definition for a constant force, work done is defined as work is force into the displacement in the direction of force, right? And precisely this expression can be written as fs cos theta, where theta is the angle between force and displacement. If theta is 0, that means force and displacement are directed in the same direction, and if they are opposite, so work done comes out to be negative. So ये जो formula हमने लिखा है, it is valid for force constant force. Basically इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, constant force के लिए valid है ये, right? For variable force, we can consider for small displacement work force to be constant, and in that situation we can write this value as to be f dx, and to be precisely we can say the dot product of force into the displacement vector. ठीक है? So these are the thing that we need to keep in mind. This is for variable force. ठीक? And secondly we need to understand about the situation of something friction के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. Friction, basically it is a force that opposes the relative motion. Let's say for example this block is we are applying a force capital F on the block, and this block is moving on the right side. So we can say जो ground होगा it will impart a force, opposing force on this block, जिसको हम कहते हैं friction force, and this is the basically kinetic friction because block is moving. So in that situation the friction acting between the block and the surface is known as kinetic friction, और उसका formula आता है mu k into n, where n is the normal reaction, mu k is the coefficient of kinetic friction. n की अगर हम बात करें, so let's say इस block का जो weight है that is mg acting in the downward direction, so normal reaction will be given from the surface on the block in the upward direction. So in this situation we can say okay, since there is no vertical motion possible over here, so n will be balancing mg, and in that situation हम क्या लिख सकते हैं, mu k को mu k into mg, right? So this is what the thing we need to keep in mind regarding the kinetic friction. ठीक है? अब यहाँ से we can also talk about work energy theorem. So work energy theorem, basically we are writing the expression that is W net is equals to change in kinetic energy. W net का मतलब है net work done on the body whether by conservative force or non conservative force. Conservative force की जब हम बात करते हैं तो it is such type of force which उसका जिसका work done path से independent हो, like for example gravitational force, spring force and electrostatic, ये सारे ही forces conservative in nature है. एंड नॉन कंजर्वेटिव की हम बात करें, सो वी डील विथ फ्रिक्शन एज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसमें वर्क डन इज डिपेंडिंग अपॉन द पाथ, राइट? पाथ ज़्यादा होगा तो वर्क डन भी ज़्यादा लगेगा. सो इन दिस इज द फॉर्मूला वी नीड टू कीप इन माइंड. सो वी कैन बिगिन विद द पार्ट. हमसे बोला गया एक बॉडी है 2 kg की, इनिशियली एट रेस्ट है, मूव्स अंडर एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, राइट? सो वी कैन से दिस इज द ब्लॉक. लेट्स से कोई बॉडी है ये 2 kg की, एंड 7 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, एंड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स मूव कर रही है. ये इनिशियली रेस्ट पे थी. काइनेटिक फ्रिक्शन हमें गिवन है, सो वी कैन सी के जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो पीछे की तरफ लग रहा होगा, राइट? सो इन दिस सिचुएशन वी कैन सी के जो वर्क डन होगा, सॉरी पहले तो हम निकाल लेते हैं कि इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना आ रहा होगा. दैट इज़ व्हाट द थिंग वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट. के 7 न्यूटन आगे है और फोर्स जो है फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, दैट इज एफ के हम लिख देते हैं. सो यहाँ पे वी कैन राइट बाय न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स एज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो नेट फोर्स होगी 7 माइनस ऑफ एफ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम ए, राइट? अब 7 तो हमें गिवन ही है, बेसिकली 7 फोर्स हमें गिवन है. सो वी कैन से फ्रॉम दिस 7 माइनस ऑफ ये हो जाएगा म्यू के इंटू एम इंटू जी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू मास इंटू
मास इंटू एक्सेलरेशन। अब अगर हम बात करें 7 माइनस म्यू के हमें गिवन है 0.1 जी हमें तो 1 हो जाएगा, ये 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2a। सो यहाँ से हम a की वैल्यू देख सकते हैं, इट विल बी 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया इस ब्लॉक का। आई होप ये वैल्यू ऑफ म्यू के एम जी कैसे ही पता चल रहा है। एम हमें 2 गिवन है, जी हमें 10 गिवन है, म्यू के इज 1, सो 0.1 into 10 will be 1, 1 into 2 will be 2. So this is how we have calculated this value. अब यहाँ से we can see acceleration हमारे पास है। Now we can try to calculate the value of work done by the applied force in 10 second. So 10 सेकेंड में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू, अगर हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू द डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ होगा जिस तरफ 7 न्यूटन का फोर्स है, एंड लेट्स से डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 सेकेंड के अंदर s है। सो दिस विल बी द केस, f इंटू एस हो जाएगा, और cos थीटा विल बी 1 इन दिस केस बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन। सो यहाँ से अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ से इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, सो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो s की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू a हमें मिला है 5/2 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, and this will be equals to 500/4, that will be equals to 125 meter। ठीक है ना। so we can check it, 100 into 5, 500/4 that is 125 meter हमें मिल गया। therefore work done क्या आ जाएगा, फोर्स हमें गिवन है 7 न्यूटन, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना था बाय द अप्लाइड फोर्स, यानी कि अप्लाइड फोर्स कौन सी है, 7 न्यूटन की है। So 7 into displacement is 125. So this will be the result we are getting, 7 5 the 35, 7 to the 14, 17, 7 on the 7, 8, 75 joules. So this is what the work done by applied force we are getting for the first part of the question, जाके A लिख देते हैं हम इस पे। Now for the second part of the question we can say work done by friction हमें calculate करना है, displace in 10 second again, so displacement तो same ही होगा 125 मीटर, but just it will be negative this time, so work done by friction will be minus of fs आ जाएगा because force leftward the displacement right side है, so just this will be the difference। force हमारे पास आएगी, force of friction is 2, यहाँ से हम देख सकते हैं म्यू के mg 2 वैल्यू मिली थी हमें, right? so 2 into 125 and that will be equals to with a negative sign, so ये हो जाएगा minus of 250 joules। so this is the answer to the second part of the question। I hope you understood the solution। all the best।